My name is Sailesh Ku Bhoi, OCS 2023, and we are here to discuss exam strategy basically. So we'll start without further ado. So we'll discuss about OPSC exam pattern. So अपना ने इटी कोचिंग नोचन तो obviously exam pattern वगैरह discuss करें तो relevant भी नहीं. Obviously जानते हो आगरू. Prelims means interview. Prelims से दीडा paper. GS1, GS2. GS1 is basically decides your merit. GS2 is qualifying in nature, CSAT. Australia question आसे 200 मार्क का था. You have to score 66.5. And GS1 रे merit decide हुए. We'll discuss GS1 रे कौन आसे आपको. And in mains there are basically 9 papers. 2 are qualifying in nature, ODI and English. And remaining 7 decides your merit. Chatta GS 1, 2, 3, 4 we'll discuss in detail. Then your essay and 2 optionals. And then interview. So total 1750 marks था अपना mains and 250 marks था interview. So out of 2000 marks, whatever you score, based on that your rank is decided. Right? Major syllabus तो अच्छी mentioned, but if we break that down simple subjects wise, then polity, history, geography, environment, economy, art and culture. Priority order रे polity is most important, then history, geography, environment ये तीनटा जाका equally important, but the catch is history रे बहुत सारा components अच्छी, ancient, modern, medieval, art and culture. Geography रे भी physical, Indian, environment, ecology टा standalone subject टा. तो history रे most important is modern, then ancient, medieval you can skip because hardly 1 or 2 questions will come. जदि टाइम अच्छे आपण कर नियंतु, अदरवाइज माने दैट शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी. एमती नहीं कि आपण मेडिएवल को ही फर्स्ट कर दोछंती. इट इज इंपॉर्टेंट बट 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम. कल्चर सिमिलर. इट इज वेरी वास्ट क्वेश्चंस आसे, बट इट इज वेरी वास्ट. इफ यू सी नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर बुक, इट इज वेरी थिक एंड बल्कि इजी, नॉट इजी टू रिमेंबर. और तार जो आपनर कॉस्ट बेनिफिट रेशियोटा एते भल न थाए. डू रीड, गिव इट अ रीड, पढ़ंतु सेटा को, से सब्जेक्ट को, बट you should know कि priority कोटा देबे because polity जदि 15 to 20 questions आछी तो you cannot skip that at the cost of let's say a subject like medieval जोटी कोटी के question आछी. And that has been the trend. जदि by chance change होची तो it's up to you and your risk, but that's how it has been till now. Geography रे physical and Indian. Physical पाई same NCERT and class notes sufficient. Indian geography पे again NCERT and class notes will suffice. Environment ecology भल से करने ही थिबे because lately बहुत सारा questions आछी. कहना UPSC रे forest service and civil services रा मिसी के prelims हुए. So that's why they ask many questions from environment ecology, and OPSC is following the same pattern. So OPSC रे भी questions आछी environment ecology रो, though they are relatively easier in nature, but nonetheless आछी. And economics रा basics. UPSC रे the standard of question becomes a little tougher, but OPSC रे economy रू question आसे किंतु आपन को basics जदि clear अछि. Basics रू मो माने हला कि आपन you should know how repo rate works, you should know national accounting, ये you should know fiscal policy, basics of it. आपन PhD करिया दरकार नहीं, and economics पढ़ियार नहीं, economy पढ़ियार अछि. So there is a basic difference between these two. And then art and culture again ए वाला येटा किसी यदि आर्ट एंड कल्चर रू जदि करंट अफेयर्स अच्छी then don't skip that because 2 years ago there was a question on Bengal and एटा सेट पे न्यूज़ रे थिला से टाइम रे because पार्लियामेंट रे प्राइम मिनिस्टर ये करथिले. Basically question is from art and culture, but that's a current affair based question. So if you are doing art and culture, don't skip the current affairs वाला part because अपन जदि किंग डायनेस्टी पढ़छन्ती तार कंट्रीब्यूशन पढ़िबे तो सेठी भी कवर हो. एंड करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक सेठी इंक्लूड करी माने आपण देखिबे बिकॉज आपण जनरल साइंस इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपण एबे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िबे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट एवर साइंस एंड टेक यू रीड दैट फ्रॉम करंट अफेयर्स. एंड तार जो स्टैटिक पार्टा अच्छी सेटा भी सेठू ही करने. सपोज देयर इज अ क्वेश्चन ऑन नैनोटेक, लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी एंड कैस्पर कैस 9 ऊपर क्वेश्चन आछी. यू शुड नो कि तार बेसिक मेकानिज्म टा केमिति कोन. So I just give you an example. Prelim strategy, so sources for prelims. Again, standard books, of course, you must be aware. Polity पाई लक्ष्मीकांत
it's the Bible. And then ancient, medieval, ancient pai you can follow R.S. Sharma, NCERT, old NCERT. Modern pai there is spectrum, but spectrum is again bulky. Old NCERT or Tamil Nadu NCERT is good enough. Then your medieval again Satish Chandra, you can follow that. Then art and culture again Nitin Singhania is there. If you want to follow, you can follow if you have time. Then environment and ecology you can follow Shankar IAS तांका जो book टा है PMFIS रो notes टा है, but those are too bulky देखी नहीं तो. And then next topic is economy रे बहुत सारा books अच्छी, but there are many books like Nitin Singhania is there is this Ramesh Singh is there, your Vivek Singh is there now, but these books are for I mean they're too extensive to be honest. You just have to get the basics right and set up on a class notes to ejiva पण जाबी सर असी पढ़ेबे economy रे, if you know that, if you understand economy well and if you substantiate that with your current affairs, that is enough. And our core topic ta miss korchi environment, ecology, geography again your NCERT will do the basics. If you want to do GC Leon, good enough, but NCERT is a must. Then your class notes are important because पण बुक्स पढ़ुचंती सीधा थोड़े फर्स्ट रीडिंग टू नोट मेकिंग टा करिवेनी, गो थ्रू इट, रीड वंस, सेकंड रीडिंग रे मे बी यू हाईलाइट क्लास नोट्स ऑलरेडी थिबा आपण पाखरे, व्हाट एवर इज मिसिंग फ्रॉम द क्लास नोट्स सेटा आपण सीटी सब ऐड करंतु, रिवाइज इट, 3 थर 4 थर रिवाइज करला परे हुए एटा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट हो जाए. फॉर एग्जांपल नाउ आई डोंट हैव टू राइट व्हाट इज आर्टिकल 14 इफ आई एम मेकिंग अ नोट, आई विल जस्ट मेंशन 14, दैट्स इट. So that will not happen in the first reading. आपन 5 थर 6 थर सेम जिनसा पढ़े you will memorize that. After that only you will be able to make concise notes. So first read class notes, read books, substantiate करंतु, सेठी add करंतु point गुड़ा को, and finally when you are done with this, जते आपन confidence आसी वाला कि you have done a basic level of preparation, make revision sheets, because फाइनल मोमेंट रे जेते आपण एग्जाम थिबो लास्ट मासे सेतेबेले यू हैव टू रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस एटलीस्ट. आपण जदि आपण नोट्स ही अच्छे 500 पेज रो 600 पेज रो, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज दैट ट्वाइस और थ्राइस इन अ मंथ, एंड आपण को एग्जाम रो दिन 2 दिन आगु आउथरे पूरा रिवाइज करिया पड़ियो. सो यू हैव टू हैव कंसाइज नोट्स. सो ट्राई करंतु कि मेक, फॉर एग्जांपल पॉलिटी बुक इज सम 700 पेजेस, ट्राई करंतु 30-40 पेजेस आपण फाइनल नोट्स टा ही जाओ. सिमिलरली फॉर अदर सब्जेक्ट्स, for example spectrum is 1000 pages, so modern history अपन class moment revise करी पारिनी सेति के अपन को modern history रो notes टा finally 50-60 pages रे दरकार, or maybe less than that, so that you can revise that in the last moment. Then current affairs integration, current affairs अपन को जदि suppose exam होची जून रे जुलाई रे, then must कि अपन जनवरी रे करंतु सेति के ensure करंतु, and then go backwards कि time अच्छे दे डिसेंबर रे, then नवंबर रे, then अक्टूबर रे. 1 year is preferable, but 6 months ra non-negotiable सेटा, you have to do that. And current affairs पाई IAS Gazette magazine, APTI it's good enough. And मु personally ओडिशा वाला current affairs पाई had simply relied on OAS Gazette, that will suffice. And current affairs रे भी आपण जतेबेले magazine टा नउचंती या फिर प्रिंट आउट करचंती, PDF रे पढुचंती, ट्राई करंतु कि आपण ताठू की पॉइंटर्स रे शॉर्ट नोट्स निजे बनांतु, बिकॉज अगेन सेम जिनस कि मैगजीन गुड़ाक बल्कि थाए, आपन जदि 6 मासर मैगजीन 600 पेज अच्छी, यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ एनालिसिस, बिकॉज आपन पढ़ी नहीं थे, बिकॉज सी फॉर एग्जांपल इफ यू आर रीडिंग ज्योग्राफी, क्वेश्चंस आउ आसुनी कि आपनकर लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट केते अच्छी, IST टा केते डिग्री देकी जाइछि, दिस आर बिकम वेरी बेसिक. एंड एबे माने OSSC SSC से गुडा का एग्जाम रे आछि, नॉट इन सिविल सर्विसेज एनीमोर. सो इफ यू आर क्रैमिंग दोस काइंड ऑफ फैक्ट्स, बट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो आपन सेटा जाना पड़ियो कोठो कि PYQ रो कि क्वेश्चंस केमिति आछि, रेलेवेंट क्वेश्चन रो लेवल कोन आपन को डेप्थ रे पढ़ियार अछि. लाइक एस इकोनॉमी सेम कि आपन जदि सपोज इफ यू गो ऑन डूइंग PhD, it's a very vast subject and technical subject.
बट आपको जाना पड़िया अच्छी कि जाना थी अच्छी क्वेश्चन को टाइप आछी सो दैट विल बी एबल टू प्रिपेयर एट दैट लेवल. Then okay, prelims approach, note making I already discussed कि revise and then make notes. Final वाला notes टा आपनकर जहाँ भी होगा it should be very concise and आपन सेटा को बारंबार revise करिया माने should be able to revise that multiple times. And subject wise PYQ practice, test and analysis, this is very important because अपन जितने भी टेस्ट सीरीज एठी आसी जॉइन करछनी मु भी टेस्ट सीरीज नहीं थी APTI प्लस रु जितने मु प्रीलिम्स दउतिली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी स्टैंडर्ड इन नेचर. भल क्वेश्चंस थाए एंड यू गेट टू नो कि आपण कोठी स्टैंड करछंती. आल्सो आपण जितने टेस्ट दउचंती यू फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर मार्क्स बट आल्सो एट योर रैंक सेटा फोकस करिए बिकॉज रिलेटिव कंपटीशन टा जदि सपोज पेपर टफ आसला आपण 60 मार्क रे भी there was a time 2 वर्ष तले cut off was 48 or something. This year, last year it was I think 70 something. This year it may go high 90 around. And it is not as if कि आपनकर क्वेश्चन ऊपर नीचे गला सीट्स केते अछि. रिलेटिव कंपटीशन टा आपण निज पीयर्स का कंपैरिजन रे केमती परफॉर्म करछंती दैट डिसाइड्स योर सिलेक्शन. सो ट्राई करंतु कि जदि एप्टी रे आपण आसी कि टेस्ट दोचंती ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ट्राई करंतु कि भल रैंक रखिया पे. ट्राई टू बी एट द टॉप so that जदि काली क्वेश्चन टफ आसुची इजी आसुची कट ऑफ केते जाउची माने आपण जेतले एग्जाम देबा को जेबे डोंट हैव दैट इन माइंड कि क्वेश्चन टफ आसी गला आपण 70 टा अटेम्प्ट करि पारले इजी आसला आपण 90 टा अटेम्प्ट करले नॉट पैनिक बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो कि आर अहेड ऑफ योर पीयर्स एंड तो फोकस ऑन दैट. आपण जेतले दोचंती ट्राई करंतु सेटा. आल्सो टेस्ट देला बेले ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स. खाली आपण माने टेस्ट रो मोटिव खाली एटा हबा कथा नुह कि अपन जो क्वेश्चन टा माने अटेम्प्ट करछंती तार सॉल्यूशन देखिने बे आ ताटू नोट्स बनै नेबे. दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव. टेस्ट टा आपनकर माने नॉलेज रो माने इंक्रीजिंग तो से करे बट दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. दैट शुड नॉट बी द ओनली गोल. टेस्ट आपण जेतेबे दोचंती तो ट्राई करंतु कि आपण निजर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखंतु. समस्तंकर गोटे गोटे रिस्क प्रोपेंसिटी थाए. आपण कोवळिया रिस्क नियंती एग्जाम रे हॉल रे समस्त से डिफरेंट थाए. एबे सपोज मु कहि देबी कि ना आपण 90 टा अटेम्प्ट करंतु दैट सूट्स फॉर मी समस्त पई करबानी. पिला अछंती 60 टा अटेम्प्ट करंती भल एक्यूरेसी रे करंती. तो स्ट्रेटजी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. आपण को निजर टेलर मेड करिया को पड़ियो से जिंसटा और सेटा हबा टेस्ट को एनालिसिस जेतेला आपण करिवे कि आपण केते टा अटेम्प्ट करछंती केते ठीक होची आपण गेस को सिचुएशन रे मारुछंती आपण दीटा जदी गेस नोचंती आपण ठीक होची ना होनी इंटेलिजेंट गेसिंग. आल्सो प्रीलिम्स इज half 50% about your knowledge, 50% about your aptitudes. I mean question solving aptitude. So it is that. Then elimination technique development very important because truth be told आपन को सब क्वेश्चन आसीबा नहीं. There will be only a few questions maybe out of 100 40 questions एमती थिबो जोटा आपन श्योर थिबे एटा ही आंसर अछि. अदर देन दैट आपन नथिए और जो 40 टा क्वेश्चन भी आपन श्योर अछंती सेथुरी तो भूल हो. तो आपन को यू हैव टू अटेम्प्ट एंड यू हैव टू मेक सम इंटेलिजेंट गेस. एमते नहीं कि ब्लाइंड गेसिंग बट यू हैव टू मेक इंटेलिजेंट गेसेस. फॉर एग्जांपल दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन कि ओडिसा को किए इन्वेड करथिले और समथिंग माने देयर वाज अ कॉलम एंड गोटे थिला ओडिसा किए इन्वेड करथिले. ऑप्शंस रे अछि महाराणा प्रताप देन मानसिंह और दीटा अछि. तो ऑब्वियसली यू नो कि महाराणा प्रताप तो एलिमिनेट कर माने ओडिसा को एनेक्स कर ही नांती केबे. सो ऑलरेडी दीटा ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाउछि. आपन जानिया दरकार नहीं चारटा को जाना थी सेटा बोली मान नहीं किसी. और फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एशियन क्रिकेट काउंसिल थिला व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ए बर्षर क्वेश्चन एबे जो प्रीलिम्स टा हेतिला एंड यू कुड इजीली एलिमिनेट 2 ऑप्शंस आउट ऑफ दोस एंड आंसर टा सीधा से जाना पड़ जाउछ. मु जानिया दरकार नहीं जे फर्स्ट मैच टा को मसिया रे हेतिला को देश रे हेतिला. यू डोंट नीड टू नो दैट बिकॉज़ इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस देन सॉल्व हो जाए से वाला क्वेश्चन टा. Then we'll discuss mains. So like I told, mains से 4टा पेपर थे GS रो GS 1 2 3 4. 1 रे there is Odisha art and culture and there is society, history and geography. History रे modern Odisha Odisha history रे specifically आपनकर keywords mentioned अच्छी. Just do that. आपन को dynasty रो आसीबो it is very detailed. It is given in a very detailed manner. तो आपण सेतिकी ही करंतु एटलीस्ट सेति करंतु. डोंट स्किप दैट बिकॉज क्वेश्चन सेमती ही आछि.
डायरेक्ट क्वेश्चंस आसे कि आपन खारवाड़ उपरे कलिंग वॉर उपरे अपन ए डायनेस्टी उपरे से डायनेस्टी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखि नियंतु डू दैट मच इन ओडिशा पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कोर्स यू हैव टू डू ओडिशा सॉरी हिस्ट्री वाला पार्ट रे ज्योग्राफी रे अगेन सेम ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट एंड सोसाइटी देन GS2 पेपर इज अबाउट पॉलिटी गवर्नेंस एंड IR UPSC रे IR अच्छी OPSC रे इट इज इंटरस्टेट रिलेशंस सो इंटरस्टेट रिलेशंस रे आपण मटेरियल गुड़ाक अवेलेबल यूजुअली न थाए कोचिंग मटेरियल आपको मिल जाव अदरवाइज जदि आप निजे बनवाई चाहते तो जिते कि नेबरिंग स्टेट अच्छी इंटरस्टेट रिलेशन रे ओडिशार सबू स्टेट सांगे तांकर कल्चरल टाइप कौन बिजनेस इकोनॉमी रो टाइप केमती अच्छी किसी माने इंट्रा बॉर्डर आपणकर माने सिक्योरिटी इश्यूज अच्छी कि बॉर्डर डिस्प्यूट अच्छी किसी रिवर डिस्प्यूट अच्छी से गुड़ा भलसे देखी नहीं थे देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस अच्छी GS3 बहुत सारा टॉपिक इकोनॉमी एनवायरनमेंट सिक्योरिटी साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर इन GS3 पेपर सो GS4 इज एथिक्स एंड सबुठू नेग्लेक्टेड बिकॉज बाकी तीनटा पेपर रे यू विल गेट द मटेरियल्स सीधा सीधा थाए कि क्वेश्चन टा आसी तार गोटे स्पेसिफिक आंसर अच्छे वाला पॉइंट रे आपन नोट्स मिल जिवो एथिक्स इज अ बिट क्रिएटिव आई वुड से बिकॉज आपन पारे लिबर्टी अच्छी suppose there is a question on honesty can be different for you and for someone else it can be different as in the basic definition will be the same but the meaning how you interpret it how you write that answer will be different so ethics रे जत्ते की keywords अच्छी again ethics syllabus is very detailed if you see बहुत सारा माने specific values integrity कौन probity कौन honesty कौन it is given in the syllabus just go through that you have to understand ki what is the difference between honesty and integrity for example I am saying so if you understand the key terms then you'll be able to write good answers तो ethics से शेयर करिए also ethics रे सबू values पाई you should have a quote ready you should have examples ready civil services रो examples नहीं होंतु daily life रो examples नहीं होंतु निजा life रो कि अपना पेरीफेरी रो anecdotes नहीं होंतु otherwise great personalities तांकर examples नहीं होंतु historical examples नहीं होंतु so it is that and ethics once you understand you'll start seeing ethics everywhere for example I'll share a short story for example there was Gukesh I'm a chess enthusiast so I was following this World Cup chess championship and Gukesh won so after that there was a press conference and they asked ki one of the reporters one foreign reporter asked ki Magnus Carlsen is still there so basically Magnus Carlsen is a stronger player but he didn't play that tournament so championship so Gukesh played instead and he won तो ताकू कहिले कि कार्लसन तो सबुठु स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बट आपण फिर भी वर्ल्ड चैंपियन हे गले आपण कोन कहिबे एंड दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड आई वाज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई टोल्ड कि भाई एटा एसे रे भलो एग्जांपल टा हे परिबो कि एसे रे जिनसटा इनकॉर्पोरेट करियो जदी काली कि पीयर प्रेशर ऊपर किसी क्वेश्चन आछी कि काली की सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऊपर किसी अच्छी एग्जांपल सॉरी माने कंपटीशन ऊपर किसी अच्छी कि हाउ कंपटीशन इंपैक्ट्स योर परसेप्शन एंड दैट फ्रेंड टोल्ड कि नहीं खाली ऐसे नहीं एथिक्स से भी अप्लाई करिए होगा सो इट इज दैट यू स्टार्ट सीइंग एग्जांपल्स एवरीवेयर वंस यू नो द टॉपिक एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन सोशियोलॉजी रे माय ऑप्शनल वाज सोशियोलॉजी एंड इट वाज ऑन मॉडर्न वर्क लाइफ मॉडर्न डे इंडस्ट्रियल वर्क लाइफ and there was an example Narayan Murthy जो कहते कि you have to work certain hours and personal life is not important है ना be workaholic and all that I mentioned that city so it is that daily news रे आपण कि social media रा हे गला memes हे गला किसी भी हे गला you start seeing syllabus everywhere if you understand the syllabus and if you know the topics well then optional subject very important again because neglected part कहीं चार्टा GS रो सोर्सेस एते अधिक अवेलेबल अच्छी पीपल टॉक अबाउट इट अलॉट बट ऑप्शनल एट टाइम्स इग्नोर हो जाए 500 मार्क्स कैरी करे एंड वॉट एवर यू आर स्कोरिंग इन ऑप्शनल आपण GS ठारू यूजुअली बिकॉज ऑप्शनल आर मेनली स्टैटिक इन नेचर देयर आर फ्यू ऑप्शनल्स जोटा टिके डायनेमिक थाए GS गुड़ाक मेनली डायनेमिक अच्छी बट ऑप्शनल प्राय स्टैटिक थाए वंस यू प्रिपेयर इट वेल यू आर डन सो पिला से मार्क्स उठे नहीं दे स्कोर रियली हाई and apna there in all likelihood you'll score more in optional than in GS so don't miss out on optional and then essay again very important because
आपणकर स्किल ऊपर डिपेंड करे एसए रे पीपल हैव स्कोर्ड 100 पीपल हैव स्कोर्ड 80 पीपल आल्सो हैव स्कोर्ड 160 एंड 170 सो इट इज दैट बिग अ मार्जिन आपन सेठी मिस आउट करि परिबेनी एंड जदि आप क्वेश्चन देखिथिबे तो फिलोसॉफिकल एसेस ओपीएससी रे भी पचरिया स्टार्ट करलानी एंड देयर आर फ्यू अप्रोचेस टू एसे जपन जते सर की मैम जे भी आपन फैकल्टी क्लास नेबे दे विल डिस्कस इन ग्रेट लेंथ श्वेता अच्छा श्वेता मैम नौचंती आम बेले से ही थिले Sweta ma'am and trust me for the first time I knew how to write an essay and what an essay should look like जेतेबेले मैम क्लास नहीं थिले and very good teacher तो आपण से डिटेल रे कही essay writing strategy टा but again आपण दीटा essay आसीबो try करंतु from my own personal experience try to write in two different styles because same लोक जे भी अछंती से चेक करछंती you should not feel bored you should not get bored आपण जदि गोटे एसेटा टिके फिलोसॉफिकल अच्छी देन आ गोटे टिके आपण जदि पेस्टल अप्रोच रे देखुछन्ते टिके डेटा बेस्ड अच्छी इट इज गुड बिकॉज द एंटायर पॉइंट ऑफ एसे राइटिंग इज जने आपण एसे पढ़िले तांकू बोर हबा कथा नहीं तांकू ए पॉइंट कोई पॉइंट इमति लागि कथा नहीं रश करछन्ती शुड बी इंटरेस्टेड टू रीड एंड जदि से पढ़ला पर तांकू फील आसला कि नहीं भल लागिला मजा आसला पढ़ी कि ही विल गिव मार्क्स देन मेंस प्रिपरेशन अप्रोच अगेन द सिलेबस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नोट्स एंड वैल्यू एडिशन मेन सिलेबस प्रीलिम्स सिलेबस ठारू माने बहुत ही अधिक फास्ट अगेन बिकॉज डिटेल्ड अच्छी बहुत सारा टॉपिक्स ऐड हो जाए सो फॉर एवरी टॉपिक फॉर एवरी माइक्रो टॉपिक यू नीड टू हैव अ 1 पेजर नोट रेडी गोटे पेज रे प्रत्येक टॉपिक रा आपण करंट अफेयर्स हो कि स्टैटिक पोर्शन हो प्रत्येक टॉपिक रा आपण पाखरे 5टा 6टा पॉइंट रेडी थिबा अछि मिनिमम बेयर मिनिमम एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक 1 पेजर नोट्स 1 पेजर और 2 पेजर नोट्स एमती नहीं कि बल्कि नोट्स अच्छी आपण ये कहते राइट इन कीवर्ड्स बट यू शुड हैव नोट्स एंड वैल्यू एडिशन डू दैट फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड फ्रॉम अदर सोर्सेस आपण जो टेस्ट लिखिबे आपण इवैल्यूएटर किछ ना किछ रिमार्क्स देबे किछ पॉइंट ऐड करिया पई कहबे डू ऐड दैट इन योर नोट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज पीपल डोंट डू दैट इफ यू आर डूइंग दैट यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन एंड इट इज डिफिकल्ट नॉट इजी बिकॉज 3 घंटा बसिकी आपन को लिखिया को पड़िबा राइटिंग 3 आवर्स इफ एनीवन हैज रिटन मीन्स बिफोर और प्रैक्टिस्ड एट होम मस्ट बी नोइंग कि 3 घंटा बसिकी नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली लिखिबा एंड व्हेन यू डोंट नो द क्वेश्चंस आर सरप्राइजिंग इन नेचर दे विल सरप्राइज यू एंड यू हैव टू थिंक देन एंड देयर एंड राइट सो इट इज नॉट दैट इजी माने आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी फियर साइकोसिस बट दैट्स द रियलिटी आपणकर मीन्स एबे के जानी को मंत्रे होची एबे तो रिसेंटली इतला शीत दिन रे बट आगु खरा दिन रे हुए इट इज दैट मेक्स इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्वेटिंग एंड ऑल बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रे आपण डेली आई थिंक वी हैव दैट स्लाइड आगु कोठी होटे बट आई टेल यू बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी तो आंसर राइटिंग रे स्टार्ट विथ डेली आंसर राइटिंग गोटे दिटा लिखंतु यू विल गेट अ बेसिक नैक ऑफ आंसर राइटिंग कि आपन को स्ट्रक्चर केमती लिखिया अछि कोन लिखिया अछि गोटे क्लास के चल छी अच्छा दिन डेली क्लास सरला परे 5टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गया अछि या गोटे आंसर राइटिंग में तो इवैल्यूएशन भी होछि दैट्स वेरी नाइस आपन ऑलरेडी माने प्रैक्टिस रे अछंती एंड आंसर राइटिंग रे बेसिक स्ट्रक्चर आपन जाना पड़ जो आफ्टर अ पॉइंट आपन को एटा माने आपन हैबिट हे जो कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट रे लिखिबे आपण हेडिंग देबे आपण अंडरलाइन करिए सब जिनस आपण को कॉन्शियसली करिया पड़ियोनी इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट बट आफ्टर अ पॉइंट स्विच टू गोटे सेट रे आंसर लिखियाटा आपण सेडा स्विच करंतु एटलीस्ट एग्जाम पाखे आसला बडकू बिकॉज राइट इन सेट्स 5टा क्वेश्चन रो सेट हो 10टा क्वेश्चन रो सेट हो जेतेबेले आपण प्रीलिम्स और मेंस मझिरे डू कम हियर और घरे आपण बसी दे ऑनलाइन टेस्ट लिखुचंती देन फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल अटेंड करंतु एंड विथ ऑनेस्टी आपण माने इतने आई हैव सीन पीपल जो मैंने टेस्ट बहुत भल स्कोर करती बिकॉज घरे बसिले आराम से 3 घंटा टेस्ट को 6 घंटा लिखिं ऑनलाइन एंड बुक्स ये करके यू आर चीटिंग योरसेल्फ सो आई मीन यू पीपल आर वाइज एनफ टू नो सो टेस्ट रिलीजियसली फॉलो करंतु जहाँ भी जो प्रैक्टिस थी बिकॉज दैट विल हेल्प कंप्लीटिंग द पेपर इन टाइम इटसेल्फ इज अ बिग टास्क जो मैंने ऑलरेडी सर्विस रे अच्छंती आउ से माने भी आउथरे रैंक इंप्रूवमेंट पई दियंती बेले बेले तांकर भी माने पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्जाम से माने भी आउथरे देले हुए कि साने पेपर कंप्लीट करबा नि गोटे दिला क्वेश्चन छाड़ी हो जाए एंड द मार्जिन इज वेरी लेस बिकॉज गोटे गोटे मार्क रे 3टा 4टा रैंक थाए सो इफ यू आर स्किपिंग वन क्वेश्चन
then you are missing out on at least अपन किसी भी आउट लिखी था at least 2 मार्क तो पाई था you are missing out on 8 माने 8टा पिला अपन ऊपर पड़ेले similarly you see जदि suppose अपन 2टा क्वेश्चन स्किप करछंती और सब क्वेश्चन सब पेपर ये स्किप करछंती then out of the race. So writing practice is very important, and use of case studies and example, again substantiate every point with your example and you जेमती data facts आपणकर फिंगर टिप से थिबा अछि बेसी नाही रिमेंबर मेमोराइज लिमिटेड सेट ऑफ डेटा एमती नहीं कि आपण पूरा ही जति कि सपोज गोटे कोचिंग मटेरियल रे अछि बोले आपण सब डेटा माने रटा मार नेबे नॉट पॉसिबल, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. यू शुड नो कि ए डेटा इंपोर्टेंट मते एटा मेंशन करिया छै सपोज एंड सब थीम रु गोटे किछटा डेटा किछटा एग्जांपल्स ऑलरेडी रेडी रखि थिबे सो दैट व्हेन द क्वेश्चन कम्स यू नो कि स्टार्ट कोड करिया अछि. फॉर एग्जांपल मोर एमती थिला कि आई नो दी काली जति वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऊपर किछि भी क्वेश्चन आछे आई स्टार्ट विथ एनसीआरबी डेटा मो पाखरे माने इंट्रोडक्शन टा ऑलरेडी रेडी अछि सो आई डोंट हैव टू थिंक मते माने मो जते जो टाइम जे मो इंट्रोडक्शन लिखुची सेती जाय मो ऑलरेडी बॉडी टा टिके अते माइंड रे भाबी नै छी कि बॉडी टा एटा हो सो आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम देयर. एंड अगेन आंसर राइटिंग फोकस एरिया लाइक आई सेड टाइम मैनेजमेंट टोटल 50 पेजेस थाए गोटे बुकलेट रे 50 पेजेस थाए एंड यू गेट 3 hours टू राइट दैट. सो नाउ डू द मैथ्स आपन केते टाइम मिले गोटे गोटे पेज लिखिया पई यू हार्डली गेट 3 minutes 3.5 minutes एंड से फिर आप क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन बुझे तार माने डिमांड अंडरस्टैंड करेंगे आप आंसर फ्रेम करेंगे माइंड एंड देन यू विल राइट. सो देयर इज अ सीन इन दिस वन नो 12th फेल कि ही टेल्स कि राइट अबाउट योरसेल्फ कि अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे आपने जिया है और खुद के बारे में लिख के दिखाओ. इट्स इज नॉट ईजी कि आप लिखे यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग डेली सर जमी कहले क्लास रे होची डेली टेक दैट वेरी सीरियसली बिकॉज prelims is qualifying in nature, mains is what decides your rank and which service you are going to get. So focus on that. Then structure, introduction, body and conclusion. Mostly जेतिक भी आपने UPSC देखंतु OPSC देखंतु जेतिक जणा भी सिलेक्ट होचंती समस्ते सही फॉर्मेट रे ही लिखुचंती. डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. इंट्रोडक्शन थाए, बॉडी थाए, कंक्लूजन थाए. इंट्रोडक्शन रे 3-4 टाइप रे इंट्रोडक्शन थाए. यू कैन स्टार्ट विथ एन एग्जांपल, यू कैन स्टार्ट विथ सम डेटा, यू कैन स्टार्ट विथ सम कोट और यू कैन स्टार्ट विथ सम कॉन्टेक्स्ट. For example, if you get a question on SIR, then you can start with the context. कि बे चलची, this has been in news, ना? So similarly, अपन 3-4 टाइप इंट्रोडक्शन था. If you have and सबु जिनसे एमती नहीं कि सबु क्वेश्चन अपन डेटा रो स्टार्ट करले किछटा जदि डेटा रो स्टार्ट करछन्ती किछटा एग्जांपल स्टार्ट करंतु किछटा डेफिनेशन रो स्टार्ट करंतु. Have that framework already ready. Then body रे again write balanced answers. अपन निजरा पर्सनल बायस एठी लिखिएनी या फिर इनिशियली मुझे जिते स्टार्ट करती आंसर राइटिंग आई हैड मेड अ मिस्टेक एंड दैट गॉट करेक्टेड बाय द इवैल्यूएटर. आपन जेमती लिखुचंती तो आपन एटा लिखिबेनी कि आवर स्क्रिप्चर्स से दैट यू आर रिवीलिंग योर आइडेंटिटी. डोंट डू दैट. सेमिति छोटो छोटो नुआंसेस अच्छी कि एमती कहनी कि आवर कल्चर. आई मीन इफ यू से आवर कल्चर इंडियन कल्चर कंटेक्स्ट ठीक अच्छी बट यू कैन नॉट बी यू नो एड्रेस अ स्पेसिफिक रिलीजन और लैंग्वेज in that sense. So body रे again take a balanced approach. जदि आपण किसी प्रोज लिखुचंती try to give a critical analysis of that also. Pros लिखंतु, cons लिखंतु, go to positive way forward. Conclusion is should always be on a positive note because you're supposed to be a bureaucrat. You're supposed to solve problems. जदि आपण जदि माने negative attitude रखिबे then how will you solve problems? So conclusion should always be on a positive note. And again conclusion रे भी किछिटा जदि आपनकर already ready made अछि then it helps because किछिटा question रे आपन conclusion भाबिया को पड़िवनी. For example, if there is a question on let's say MSME रो importance कोना economy पई then you can simply write in the conclusion में आपन किछि आसुनी जदि conclusion then you can simply write that we need to focus economy is a major cog in the wheel in our path of economic development and that will help our mission of achieving Viksit Bharat 2047. So government का goal भी है गला अपन positive note भी दिले and you write a good conclusion over there. So ये बढ़िया किस्टा conclusion अपन ready रखी था. For example, if there is a question on PRI, you can end that we need to strengthen our grassroots democracy through our Panchayati Raj system so that we can achieve Gandhiji's vision of Gram Swaraj. Now that looks specific and a good conclusion. से बढ़िया अपन
आंसर राइटिंग ये सब जिन ध्यान देवे लाइक आई सेड यूज ऑफ डेटा रिपोर्ट्स एंड एग्जांपल्स व्हेनेवर यू आर साइटिंग अ डेटा ट्राई टू मेंशन को रिपोर्ट रे अच्छी सेटा यू कैन नॉट सिंपली से कि लेट्स से देयर आर 20% डाउरी केसेस इन द कंट्री अपन जानले केमती तो ट्राई टू मेंशन दैट सोर्स कि कोठु होला जदि अपन लिखुचंती कि इंडिया रे लास्ट ईयर 2000 टा साइबर अटैक हेतिला मेजर साइबर अटैक हेतिला देन राइट द सोर्स एंड रिपोर्ट्स एग्जांपल्स अगेन किछटा स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड एग्जांपल्स थाए अपन सेटा फॉर एग्जांपल देयर इज एनसीआरबी डेटा देयर इज एनएफएचएस देन देयर इज दिस पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे किछि एवढा डेटा थाए जोठी अपन को बल्क रे 4-5 डेटा मिली जाए सो फोकस ऑन दैट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एस्थेटिक्स बहुत मैटर करे आपनकर आंसर राइटिंग जदि पेपरटा देखियो गंधिया लागुची जदि हैंड राइटिंग ठीक नहीं जदि आपण कट करछंती पूरा पेपर सारा भल से रखिया को पड़ माने नीटली लिखिया को पड़िबो एनफ स्पेस अछि माने इवन इफ यू हैव कंटेंट फॉर 20 मार्कर्स देयर आर 4 पेजेस टू राइट फॉर 15 मार्कर्स देयर आर 3 पेजेस टू राइट एनफ स्पेस थाए सो यूज दैट स्पेस इफेक्टिवली एंड हाउ विल यू यूज दैट स्पेस इफेक्टिवली थ्रू डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स मैप्स जिते भी ज्योग्राफी क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन और लेट्स से इंटरस्टेट रिलेशन क्वेश्चन आसुची ट्राई टू ड्रॉ मैप्स ओडिशार मैप एंड इंडिया मैप आपण भल से बनाया आसुवा अच्छी एंड विदिन क्विकली कर डोंट टेक टू मच टाइम इन ड्रॉइंग दोज मैप्स एंड आपणकर माने सिंगल स्ट्रोक रे जदी होची इट्स गुड एनफ एंड सिमिलरली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अपन फ्लो चार्ट्स रे आपनकर बहुत सारा जे भी आंसर राइटिंग रो क्लास नेबे आई एम श्योर ही और शी विल गाइड यू कि आपनकर को टाइप रो डायग्राम्स थाए फॉर एग्जांपल हब एंड स्पोक डायग्राम थिबो ट्री डायग्राम थिबो आपनकर डिफरेंट फ्लो चार्ट्स अच्छी यूज दैट चार्ट जेतु जदी आपण जणे सपोज फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि लेट्स से जदी जणे जीडीपी ग्रोथ देखौची one person is writing that few years 3 years ago our GDP was this year our GDP is this, so we have progressed. At the same time someone else is representing and say what a graph ta banaichi and he has shown in the line graph it shows it looks well and what is simply sete apana half mark ki 1 mark extra pai jibe. So use diagrams, flow charts and maps effectively and write 1 or 2 daily answers and you're doing it already. एंड जितेबाला आपणकर व्हेन यू गेट अ गुड नैक ऑफ आंसर राइटिंग आपण को आउ ए बेसिक्स रे प्रॉब्लम हबनी सेतेबेले स्विच टू सेट से लिखिया स्टार्ट करंतु बिकॉज आपणकर हाथ सेतेबेले स्पीड हुए एंड यूज कीवर्ड्स फ्रॉम डायरेक्टिव वर्ड्स एंड मेंटेन बैलेंस्ड आर्गुमेंट्स लाइक आई टोल्ड एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड विथ वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस एंड जदि बहुत टाइम रे क्वेश्चन रे हुए एटा क्या किछोटा पचारिछि बट इट इज इम्प्लाइड एंड अंडरस्टूड दैट आपण गोटे एक्स्ट्रा डायमेंशन देबे फॉर एग्जांपल इफ इट इज आस्क्ड कि आपण बेनिफिट्स ऑफ समथिंग पचारिछि तो आपण खाली बेनिफिट लिखिबेनी जेतार किछि ड्रॉबैक अछि पचारि भी नाही जदि और डोंट मेक दैट द एंटायर थीम ऑफ द आंसर बट लास्ट को शॉर्ट नोट्स माने एज अ फुट नोट और समथिंग कंक्लूजन आगरो पेनल्टीमेट लाइन्स रे मेंशन दैट because if you are not doing that someone else is doing that and that person will get better marks and I think the next one is ma'am I think this last pillar okay so this was it and if you have any questions to ask then you can ask question pachara hi Sailesh ma'am online hello Sailesh hello yes tell me yeah hi this is Mamta here yes and first of all congratulations for your achievement and best wishes and good luck for your future professional career thanks ma'am yeah I have 3 parts of question for you let me put it up here so my first question to you is like when you were preparing you had gone through several see I didn't have much time to be honest I had 7 or 8 months to prepare before the prelims and that's when I started my preparation my basic brief story is I was a classroom student way back when I was in my graduation 2017 2018 and 2018 2019 I was in those two batches
post that I changed my plan, I switched to a different job and I was working elsewhere. I left that job and I came back and then I prepared. So I had both in calm time, I had limited time, and in that I prepared. So I think what worked for me was the to know the demand of the exam, to understand the competition. I think that helped me because see, not everything is important. If you ask me about I mean many of people who couldn't clear prelims, maybe they are more knowledgeable than me in some of the aspects because maybe they have studied more, but I studied whatever is important for the exam and whatever is relevant. So and I have utilized whatever I knew in the mains answer. ମୁଁ जहाँ भी लिखी मुझे सेतिकी ही जानी थी, and I have utilized everything. It is not as if मुझे जानची किसी छोटे मुझे भूली लिखी पारने. So I think that worked for me. The second question was can you please अच्छा Odisha specific see syllabus रे detailed mentioned अच्छी. If you see history ना, तो history रे detailed mentioned अच्छी. Just do that much, it's enough. जिम्ती हाँ, and APTI I have seen that material also. It's very good and comprehensive. You can follow that. Also जदि आपण निजे भी करूचंती तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्टटा अच्छी सेटा ओडिसा रो सेथरे भी मेंशन अच्छी कि ओडिसा ग्रोथ ऑफ लिटरेचर कोन. सी स्मार्ट अप्रोच, गो थ्रू, डू चैट जीपीटी वंस, यू गेट एवरीथिंग. माने गोटे दिन रे आपण पूरा ओडिसा कवर कर नहीं पारिबे जदि आपण पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर करिया पे चाहउचंती. आई हैव डन दैट. मु सेमतिया ही करथिली. एंड yes and PYQ thare देखि नियंतु. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन भितरकनिका आई थिंक. सो जदि भितरकनिका ऊपर आसी छि, यू कैन एक्सपेक्ट चिलिका ऊपर आपण प्रिपेयर करि पारिबे. शिमलीपाल ऊपर आई थिंक शिमलीपाल ऊपर थिला और भितरकनिका ऊपर थिला 2 वर्ष तळे कोड क्वेश्चन ओडे. तो इफ यू हैव सीन के एवळे क्वेश्चन आउट ओडिसा रो, देन आउ कोन अछि पचारा जाय पारिबो. दैट्स कॉमन सेंस. सो यू प्रिपेयर इन दैट फैशन. एंड थर्ड पेन ऊपर yes that's a I mean कलर्ड पेन एक तो अलाउड नहीं, ऊपर से अपन को ब्लू और ब्लैक पेन रे लिखिबे. एंड मोर ओवर अपन को अपन पारे टाइम ही नहीं कि अपन पेंसिल यूज करिए और ये करिए. बिल्कुल टाइम हुए नहीं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पेपर. एंड मु एटा एथिपे एम्फेसिस करूचे बिकॉज समस्तंकर हुए एमती नहीं कि माय हैंड राइटिंग स्पीड इज गुड एंड आई फिनिश्ड एवरी पेपर इन जस्ट बिफोर 5 minutes. आउ सेटा फिर माने ये तो राइटिंग 50 पेजेस अपन पेन स्विच करी पारि माने सेति की स्कोप ही नहीं. इट इज वेरी डिफिकल्ट. अपन थरे बस बोतल उठाई पानी पी पारिबे सोशल लागिले. एमती भी नहीं कि अपन एमती माने चिल करचंती, रिलैक्स करचंती. यू डोंट हैव दैट स्कोप इन मेंस इज वेरी ग्रूसम एंड इट इज टफ. सो से वाला स्कोपटा नहीं. ऑल्सो पेन रे इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन को जो पेन रे मेंस लिखिया एबे तो नहीं बिकॉज इन फाउंडेशन प्रीलिम्स थरे अपन क्लियर हो गला परे मेंस रे अपन जो पेन रे मेंस लिखिबे ट्राई करंतु कि सेही पेन रे ही अपन आंसर राइटिंग टा करंतु. एंड ट्राई करंतु कि नॉट मैंडेटरी लोक 3 टंकिया यूज एंड थ्रो रे भी क्लियर करंती, रैंक आनंती. इट इज नॉट मैंडेटरी. बट थरे अपन रोलर बॉल पेन V7 हो, यूनिबॉल हो, ट्राइमैक्स हो, एगुड़ाक टिके थरे यूज करनियंतु. सी देखंतु कि आपनकर कंफर्टेबल कि नहीं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मोर हैबिट एमती हो जाइथिला कि मु जदि बॉल पेन रे लिखि थांती मु पेपर कंप्लीट ही कर पारना थांती. एंड जेतेबेले आपण थरे रोलर बॉल रे लिखुचंती तो इट लुक्स गुड ऑन द आई आल्सो कि आपण प्रोमिनेंट ही कि देखा जाए बोल्ड रे. सो चूजिंग अ पेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. साउंड्स वेरी ट्रिवियल, बहुत ही नॉनसेंसिकल लागिबो कि पेन रे कोन अछि, बट इट इज इंपॉर्टेंट. एंड गोटे पेन नेबे ब्लू और ब्लैक. एंड व्हिचएवर पेन यू आर यूजिंग चूज दैट वाइजली. Thank you. Thank you. आपका क्वेश्चन अच्छे. सोशियोलॉजी पई सी यूपीएससी पई ऑप्शनल रो माने मटेरियल एनफ अवेलेबल अछि. आपण जदी को भी कोचिंग एठी हो कोठी हो आपण जदी जॉइन करछन आपण कंप्लीट येडे मिल जिवो, कोर्स मिल जिवो. एंड ऑल्सो मटेरियल्स अवेलेबल अछि. फॉर एग्जांपल सबुटो जो क्लीशेड वाला एग्जाम माने येटा थाए नितिन सांगवान आगु गोटे वॉल्यूम आसला बे 2टा वॉल्यूम आछे. पेपर 1 पे पेपर 2 पे अलग अलग. यू कैन रेफर दैट. बट सेठी वैल्यू एडिशन करिया पड़े आपन को. एंड यू कैन डू दैट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन आपन यूट्यूब रो करि परिबे, आपन गूगल रो करि परिबे. सो यू हैव टू ये. एंड ओपीएससी रे गोटे डिफिकल्टी एटा हुए कि ओपीएससी और यूपीएससी रा जो ऑप्शनल सिलेबस था ना, इट इज 60% 60-65% सेम थाए. तो जो रेस्ट 30-35% अच्छी तापाई नोट्स नहीं.
जदि आप कोचिंग जॉइन कर ओपीएससी स्पेसिफिक देन विल गेट दैट अदरवाइज जब सेल्फ प्रिपेयर कर ऑप्शनल देन इट बिकम्स डिफिकल्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मु ओडिशा स्पेसिफिक जहाँ भी थिला आई हैव डन चैट जीपीटी एंड आई हैव डन दैट फ्रॉम देयर एंड अगेन यूजिंग चैट जीपीटी इज लाइक इट डिपेंड्स ऑन योर आर्ट ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट्स यदि आप भल प्रॉम्प्ट दौरान तो भल आंसर आसो खराब दौरान तो खराब आसो माने सपोज इफ आई एम सेम टॉपिक ऊपर आम दिज सर्च कर जरूरी नहीं कि सेम रिजल्ट आसो सेम रेस्पॉन्स आसो सो इट इज दैट आप एंड सोशियोलॉजी आप जहाँ भी पॉइंट लिखुं फॉर एग्जांपल जमी जीएस आप जहाँ भी पॉइंट लिखुं यू सब्सटेंशिएट दैट विथ डेटा एंड एग्जांपल सिमिलरली सोशियोलॉजी हो कि कोई भी ऑप्शनल हो व्हेन यू आर राइटिंग ए पॉइंट सब्सटेंशिएट दैट विथ अ थियोरेटिकल बेसिस और अ थिंकर समथिंग बिकॉज सोशियोलॉजी रे और मे बी पीएसआई रे और बाकी ऑप्शनल रे यू आर नॉट द सोशियोलॉजिस्ट यू आर जस्ट अ थिंकर मुझे एमती कही पारि मैरिज इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया किए कहला मैरिज इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया आई हैव टू कोट दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी और अकॉर्डिंग टू दिस सोशियोलॉजिस्ट मैरिज इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया सो इट इज दैट सोशियोलॉजी ऑप्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन सो इट डिपेंड्स कि आपन बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन टा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपन पारे केते टाइम अच्छी फाइनेंशियल रिसोर्सेस केमती अच्छी और आपन केते रिस्क ना पई चाहछन पर्सनल सिचुएशन टा कोन फॉर एग्जांपल जदि आपन मते कहबे मु करना थांती प्रिपेयर दीटा का संगे बिकॉज मोर से वाला एटीट्यूड टा थिला कि मु गोटे देबी भल से देबी एंड आई विल गेट थ्रू सो इट इज दैट दीटा मैनेज करे टिके डिफिकल्ट है बिकॉज सीजीएल रे यू आल्सो हैव टू फोकस ऑन क्वांट रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है सेटा सीसैट रे सेटा अपन करिया पड़ियानी बिकॉज 66 मार्क्स रो ये थाए अपन जदि बहुत ही वीक अच्छे देन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड डू हार्ड वर्क अदरवाइज सीसैट क्लियर करिया बेसी डिफिकल्ट नहीं पर सीजीएल रे बिकॉज दैट डिसाइड्स योर रैंक दैट डिसाइड्स योर मेरिट तो आपको से प्रैक्टिस करिया थाए ऑल्सो सीजीएल रो जीएस पार्टा सेम थिले भी ओपीएस रे डिफरेंट क्वेश्चन आसी सीजीएल सेम टॉपिक रू हिस्ट्री रू जो क्वेश्चन देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट तो आपको डिफरेंट प्रिपरेशन टा थाए तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो one thing more classroom student thili 2017-18 रे like I said and many of my classmates because mu to I was young I was 17 or 18 more mane I didn't have a voter card back then but सेतेबेले जो माने कोचिंग नौथिले they were attempting most of the classroom students they have cleared the exam so it may take 1 year or 2 year or 3 years maybe if luck jadi semti apna it does not go in your favor but if you are doing everything right then you will clear the exam so competition is there you know that figure that people say कि लक्षे पिला apply करछन्ती it will be difficult ये वो it is not that लक्षे पिला apply करछन्ती पिला actually के हाँ से माने it is not even 5,000 to be honest it is less than that it is very less than that so एटा डिपेंड करे कि आपण से जब सपोज 2000 टा पिला कंपटीशन रचन ता भीतर 500 जन सिलेक्ट होचंती इट इज अप टू यू वेदर यू आर इन दोस 2000 और नॉट कंपटीशन सेति ही अछि सो जदि आपण गोटे एग्जाम को टारगेट करंतु भल से टारगेट इफ यू आर ट्राइंग फॉर सीजीएल राइट सीजीएल फर्स्ट क्लियर दैट देन आपण टाइम नहीं कि ओसीएस करंतु बिकॉज़ बहुत जन का प्रॉब्लम सेटा हुए दीटा तीनटा मल्टीपल एग्जाम्स दियंती एंड ना एटा हुए ना सेटा हुए तो इट इज दैट बट अगेन पर्सनल आपण ऊपर डिपेंड करछ हाउ के पछैबो has become a cliche for example 6th रो geography पढ़ी आपण घंटा करिवे if you are reading let's say spectrum what's the point of reading NCERT then एमती basic English history geography उटा humanities subject it requires simple comprehension ये तो किछिटा जिनस रे आपण NCERT करियो पड़े like I said geography it's a must आपण करिवे ही करिवे 11 12 yes history जदि आपण करना इट्स ओके बट देन आपन तार सब्स्टिट्यूट करिया पड़ेगा इफ यू स्कीपिंग दैट एंड जदि आप फाउंडेशन वाला अच्छे आपन पारे 1.5 year अच्छी 2 years अच्छी कि आप नेक्स्ट ईयर को अटेम्प्ट कर 2027 को अटेम्प्ट कर देन गो थ्रू द एनसीईआरटीज बट अपन 6 मास अच्छे आप एनसीईआरटी करिया तो हबनी दैट्स दैट